Namaste student. Today we are going to see exercise 16a, page 196, book R.S. Agarwal. So here, class 6. So we are going to see this all question. The first one is what? Take three collinear points. So take three collinear points on your page. So right now let's take a page. So we'll see here, one by one we're going to see here what they are saying and how to solve it. Okay, sorry. So this is collinear. Collinear and non-collinear means what? If we'll take a line segment and if we'll take 3 points on this, that means A, B, C are collinear. Now if I'll take 2 points and which is not on the line segment, if we'll give a name B or C and these are not on the line segment BC, the point third one, then if we'll join them, you can see that you will get a triangle and they are non-collinear. Remember, this is collinear and this is non-collinear. From collinear points you will not get a triangle, and for non-collinear point you will get a triangle. So more than, it's not necessary that only 3 points are said to be collinear. That means 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lie on the same line segment or on the same line. Now our question is what? Take 3 non-collinear points. Take 3 non-collinear points on the page of your notebooks. This is your page on the notebooks. Now they are saying that join them and give a name ABC. So here we're going to give a name ABC. Now we're going to join them. That means AB, BC and CA. If we'll join them, we can see that there is a triangle ABC. Now what they are asking? The first question is that what the figure do you get? So we'll get triangle. Definitely our answer is triangle. We'll get triangle. Next question, name the side opposite to angle C. This is angle C and opposite to this one there is a side we call AB. So first answer is AB. Next, second one, the angle opposite to the side BC. So this is your BC and opposite to the BC you have an angle that is called angle A. So we'll write here angle A. Your answer is angle A. Next, the vertex opposite to the side CA. See, these are the vertex B, C, A. These are the vertex, and they are saying that find the vertex opposite to what? Find the vertex opposite. Third one, yes. The vertex opposite to CA. CA is where? This is your CA, and the vertex is what? B. So your answer is B only. Just you write B, nothing else. Please do not use here angle, otherwise it will be angle B. So if you write only B, it is a vertex. Next, the side opposite to vertex B. The side opposite to vertex B is what? Side opposite to vertex B. This is your vertex B and the side is what? CA or AC. So you may say that AC or you may say CA. Both are correct. Any one of them you need to write. Okay, let's proceed for the second question. Second one we're going to see what they are saying. The measure of two angles of a triangle are 72 and 58. Find the measure of the third angle. So what we're going to do? We'll take here, let the third angle be what? X. Then what? By angle sum property. Angle sum property. By angle sum property, we can say that x plus what? 72 plus 58 will give you 180 degree. Angle sum property says that sum of angles of a triangle is 180 degree. So we have a triangle, we don't know the name of this triangle. Right now we have a triangle, we have 58 degree, we have 72 degree, and we need to find another one. We're going to take the third angle will be x. Now if we add them, you will get 180 degree. So in this case what we're going to do, we'll add them, add it. How many we'll get here? We'll get 130. Now the 130 will go this side, we'll get 50 degree. So our answer is x equals to 50 degree. This is your answer. Next we will proceed for the third one. Third one says that the angles of a triangles are in the ratio 1:2:5. Find the measure of each of the angles. So let the angles be. So for third one, what we're going to write? Let the angles be x, then 3x, then 5x. So whatever ratio will be given, you change there and you use x. Like if it is 2:7:5, then your answer will be 2x. Let the angle be 2x, 7x, 5x. We take it like that. Okay.
So right now we have 1:3:5. So our angles are x, 3x, 5x. Instead of x, you may use any other variable, no problem in that case. After that, therefore, we can say that x plus 3x plus 5x will give you 180 degree. Reason? You need to write beside by angle sum property. So angle sum property says that sum of the angles of a triangle is 180 degree. So you need to write, or you need to mention that one. Okay. Now we have this one and you add it, we'll get here 9x. 9x equals to 180 degree, and that x equals to what? 180 divided by 9, and we'll get here 20. So our x is 20. This is not our angle. Angle we have taken as x, 3x. Yes, this is one angle. So therefore angles are first one is x, that is your 20 degree. Second one is 3x, we'll write here 3 into 20 degree, that is 60 degree. And the third one, that is 5x, so we'll write here 5 into 20 degree, and we'll get here 100. Now if we'll add them, see here 20, 60, 120, total you will get 180. It must be, otherwise there's a mistake. So this is your third number, and the next proceed for the fourth one. One of the acute angle of a right angle is 50 degree. Find the other acute angle. That means one right angle triangle is here. Draw it here. One is 90 degree. Right angle means 90 degrees here. And next, one acute angle they have told here 50 degree. So what about this one? So we'll take here. We'll write here. Let the other acute angle be x. Let the other acute angle be x. Then therefore we can say that x plus 90 degree plus 50 degree will give you 180 degree, and reason we'll write beside, that is angle sum property by angle sum property. Why? Because sum of angles of a triangle is 180 degree. You need to mention this one. Okay. Now if we'll add them, so here we'll get x equals to 140. We'll get okay, first I'll write here 140 this side, and I'll send right now transposition method. Your 140 will go that side, it will give you minus 140, and now if you subtract it from here, you will get 40 degree. So x is your 40 degree. Add it, you will get here 40 degree. So next question will proceed, that is your question number 5. So question number 5 says that one of the angles of a triangle is 110 and the other two angles are equal. What is the measure of each equal angles? Let the each equal angles be, let the measure of each equal angle be x. That means, therefore, then we can say that x plus the third one is what? We'll see, third one is 110. So we'll write here 110. So 110, and total will get here how many? That is 180 degree this side, and 2x will get here 180 degree minus 110, and we'll get here 70 degree. So 2x, that means x equals to 70 degree by 2, that means we'll get here 35. So x equals to 35. That means each equal angle will be what? 35. This is our answer for the fifth number. Now we'll proceed for the sixth one. We'll see the sixth one, what it says. If one of the angle of A is equal to the sum of the other two, show that the triangle is a right angle triangle. आपको क्या बोला है, चलिए हम लोग हिंदी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. कहता है कि एक एंगल जो है बाकी दो एंगल का बराबर है. ठीक है, एक एंगल जो है बाकी दो एंगल का बराबर है. बताने के लिए पूछा है कि आपसे जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल बताने के लिए आप किसी एंगल को 90 डिग्री दिखा दीजिए. अगर आपको 90 डिग्री मिल जाता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग प्रूव कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं लेट द टू इक्वल एंगल्स. यहाँ पे आपके क्या बोले, सम ऑफ टू एंगल्स है ना, दो एंगल्स के सम जो है वो थर्ड एंगल के बराबर है. तो हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ठीक है, तीन एंगल मान लेते हैं, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी.
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लो आपको दिया हुआ है एंगल ए जो है वो बराबर एंगल बी प्लस सी का दिया हुआ है, ठीक है। आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, बाद में जो भी है कोई दिक्कत नहीं, बाद में बनाएंगे, नहीं बनाने से भी चलेगा डायग्राम। फिलहाल आपको ये समझने की कोशिश करना है कि एंगल ए जो है बाकी दो एंगल का बराबर है। अब आप चाहते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो आपको क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि इन ट्राइंगल ए बी सी आपको ये तीनों एंगल्स मिला के 180 आता है, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है। तो आपको ब्रैकेट में जरूर लिखना है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ यू कैन सी दैट एंगल बी प्लस सी, अभी आपने देखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है। दैट मीन्स आप एंगल ए इधर लिखिए और बी प्लस सी के जगह भी एंगल ए लिखिए, तो आपको मिलेगा दो एंगल ए, मतलब टू एंगल ए यू विल गेट 180 degree. That means angle A equals to what? 180 degree by 2, and if you cut it you will get here 90 degree. That means your angle A is 90 degree. In a triangle ABC you are getting angle A equals to 90 degree. This imply, therefore we can say that therefore triangle ABC is a right angle triangle. Right angle triangle कह सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना था कि अगर एक एंगल बाकी दो एंगल का बराबर होता है तो बता दीजिए कि वो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। तो हमें एक एंगल को 90 डिग्री का बराबर दिखाना था, तो हमने दिखा दिया कि एक एंगल आपके 90 डिग्री के बराबर है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ 7 नंबर्स को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ ट्राइंगल if 3 times of angle A equals to 4 times of angle B and 6 times of angle C, calculate the angles। तो हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो फर्स्ट विल गोइंग टू राइट दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो व्हाट वी हैव, सो वी हैव हियर 3 times angle A equals to 4 times angle B equals to 6 times angle C, ठीक है। ये तीनों बराबर होता है, दिए हुए हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसको अगर अच्छे से देखते हैं तो आप इन तीनों को x के बराबर भी लिख सकते हैं, तो वैसे करके भी निकाल सकते हैं। दो मेथड है, तो लेट्स सी, 2 मेथड को देखेंगे। सबको मिला के x लिख देंगे। अगर आप सबको मिला के x लिखते हैं तो एंगल 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल्स टू x कह सकते हैं, और एंगल A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/3। नेक्स्ट 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल्स टू x कह सकते हैं, एंगल B इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, x/4। नेक्स्ट 6 types of angle C equals to x, then we can say that angle C equals to x/6. So in triangle, what we know that in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C will give you what, 180 degree. Angle sum property. Every time you need to mention this reason why you are writing 180 degree in your triangle. Now you substitute the value. Angle A आपको कितना मिला, x/3, angle B you are getting here x/4, and angle C you are getting x/6 total. You find the LCM. If you find the LCM you will get here 12 आपका LCM मिल रहा है, that is 4x plus 3x plus 2x, so 180. If you add then 7 plus here you will get 9x and 180. This 12 will multiply with this, cross multiplication will be there, 1 into this whole thing, 1 into 9x means 9x, and 12 into this, you write here 12. Next step, x equals to 180 into 12, and this 9 will come out here. Now you cut it, 9 20 क्या, and you will get here x equals to 240, x equals to 240 degree. Now therefore एंगल A कितने हो जाएंगे, एंगल A आपने लिखा था x/3 लिखे थे आप, तो राइट हियर 240, x मतलब 240/3, कट इट, विल गेट हियर 80, तो एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल B यू हैव रिटन हियर x/4, तो आपको लिखना है 240/4, एंड इफ यू कैंसिल इट यू विल गेट हियर 60 डिग्री, तो angle B equals to 60 degree. And if you proceed for the angle C, you can see what, x/6 240/6, and if you get, you can see 30 degree. So your answer is 80, 60 and 30 degree.
Now this is one method, you can use this method. Another method also we have, we're going to use that also, we can check that one also. So let's take another page. So question number 7. So here we have question number 7. We're going to see the question number 7. That is, we have 3 times of angle A equals to 4 times of angle B equals to 6 times of angle C. Now, if you will take 3 times of angle A equals to 4 times of angle B, you can write angle A equals to 4 by 3 of angle B. This is one condition you will get, angle A equals to 4 by 3 angle B. Next, if we'll take 4 times of angle B equals to 6 times of angle C, you can find here that 6 will come here to 4 by 6 angle B equals to angle C. And if you cancel it here, you will get here 2 and 3. That means 2 by 3 angle B equals to angle C. This is another. Now in triangle ABC, what you can see that angle A plus angle B plus angle C will give you 180 degree by angle sum property. Now you substitute the value of angle A in term of angle B. तो आप A के जगह पे B के टर्म का जो वैल्यू है वो बिठा दीजिए 4 by 3 एंगल B. B को कुछ ना कीजिए, मत छेड़िए, इसको रहने दीजिए क्योंकि आप B के टर्म में लिखने वाले हैं, तो B को ही रहने दीजिए और यहाँ पे C का वैल्यू इन टर्म ऑफ B लिखिए. ठीक है, चलते देने. अब देखिए आपको B और तीनों में B कॉमन मिल रहा है, तो B को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. एंगल B को अगर बाहर निकाल लेते हैं, या तो आप एलसीएम कर लेते हैं, तो रहने दीजिए, B को बाहर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग एलसीएम करते हैं. तो आप देख सकते हैं एलसीएम 3 और 1 है, तो आपका एलसीएम मिलेगा 3. अगर 3 कॉमन है तो आपको मिलता है 4 एंगल B. इसमें 3 मिल रहा है तो 3 इंटू एंगल B मिलेंगे, और 3 मैच कर रहा है तो 2 एंगल B मिलता है 180. नाउ if you add them, so you'll get here 9 angle B equals to what? By 3. You can write here 7. You can see the 7 plus 2, that is 9. 9B मिल रहे हैं और नीचे 3 है आपके पास और 180 डिग्री. तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको मिलता है 3. तो आपको मिल जा रहा है, you can see that angle B equals to 180 by 3, and if you cancel it, you will get here 60 degree. एंगल B आपको 60 डिग्री मिला. चलिए थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पहले वाले क्वेश्चंस जो सॉल्व किए थे हम लोग जिस मेथड से, उसका आंसर में B क्या था. देखिए B का वैल्यू देख सकते हैं 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी आपको 60 डिग्री मिला. जो भी मेथड यूज़ कीजिए यू विल गेट द सेम. नाउ सर अभी A और B को कैसे मिलेगा, आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला है इसमें अगर आप B का वैल्यू बिठा दीजिए और इसमें भी आप B का वैल्यू बिठा दीजिए तो आपको A और C मिल जाएगा. चलिए हम लोग ढूंढते हैं. तो एंगल A इक्वल्स टू हमारे पास करना हो, एंगल A इक्वल्स टू व्हाट? 4 by 3 एंगल B. So 4 by 3 into 60 degree. Cancel it here, you will get 20 and we will get here 80 degree. Have you seen? Angle A equals to हमें 80 degree मिल गया, और एंगल C equals to 2 by 3 of angle B. That means 2 by 3 into 20, not 20, that is a 60 degree, and we'll get here. Cancel it here. 60, no? Yes, that is your 20 degree, and we'll get here 40 degree. So if you match it here, so some are mistake. Where is the mistake? 40 degree here, just once count. Yes, 40, we are getting here 40. So we made a mistake here somewhere. That is here, sorry, not 30 degree, actually yes, 640 here. So there's my mistake. So 40 degree, we'll get 40. Both should have the same value, whatever method you apply. So here we can check here 80, 40, and 60. So these are two methods. You can apply this one and you can solve it. Next one, these are very easy. By looking at look at the figures and given below and state each triangle whether it is acute or obtuse or right angle triangle. So this one you can see that more than 90 degree, that is your
obtuse angle triangle, and if you see this one 60 60 60, it is acute angle triangle, and here one is 90 degrees here, that means you can say that it is right angle triangle, and this is more than 90 degree, it is obtuse angle triangle. Now here we have, so in this one you need to find that scalene, isosceles and equilateral triangle. So if you see the first one, you can see that 2 and 2 centimeter, both two sides are equal, that means it is isosceles triangle. All sides are different in length, that means it is a scalene triangle. Oh no, not all are different. Here 2.4 and 2.4, you can see it is isosceles triangle, and here all are different, that means it is a scalene triangle. Here all sides are equal, that is an equilateral triangle. What about this one 60 60 60? So what type of angle we'll say? It is acute angle triangle, but here they are asking about your scalene, isosceles or equilateral. So which one we're going to say? We know one property of equilateral triangle. Each angle of equilateral triangle is 60 degree, and here we are getting each angle is 60 degree, that means we can say that it is equilateral triangle. Now if you see this one, the base angle here 55 degree, you can see that 55 two angles are equal here, that means we can say that it is your isosceles triangle. One property is there, opposite sides of opposite angles of equal sides are equal. This means these two sides are equal, it is isosceles triangle, and the base angle is also same. It's not compulsory it should be base, here maybe your 55 and 70 here, then also we'll say that it is isosceles triangle. And if we look at this one, all angles are different, and this is your isosceles triangle, this is equilateral triangle, that means if all angles are different, then it is called scalene triangle. Now look at this one. So draw a triangle ABC, take a point T, draw a triangle ABC, take a point D on a BC and join them AD. Now after that, how many triangles we'll get? So here we'll get ABD, triangle ABG. You can write here angle triangle ABD like this, you can write, and another is we'll get here triangle ACT, we may write like this, or one more triangle, or triangle ABC also we are getting. 3 triangles we are getting from this one. Previously we have only one, but after joining this one we are getting 3 triangles. Now we'll proceed for the question number 11. So question number 11, what is a very important question. Let's try to understand. Can a triangle have the 2 right angles? No, it's not possible, because in a right angle triangle, if we are getting one is 90 degree. Now if we'll take another 90 degree, another 90 degree if we'll take, so 90 plus 90 we are getting 180 degree. How could you make one more angle? 2 एंगल आपको 180 मिलता है, तो आपको 3 एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है आपको 180 होना चाहिए. अगर आप 2 एंगल को 90 और 90 मान लेते हैं तो एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल सी आपको मिलेगा 180 इस तरफ मिलेंगे, और एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 180 डिग्री, तो 0 डिग्री मिल रहा है. तो 0 डिग्री मिलने से ट्रायंगल आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है. तीनों एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको होना चाहिए. तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद अ 2 राइट एंगल ट्रायंगल. Similarly, we cannot construct a triangle with a 2 obtuse angle triangle. That means, can a triangle have 2 obtuse angles? So your answer will be no. A triangle cannot have 2 obtuse angle, as it violates the rules of angle sum property of triangle. क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल मिलके 180 होना चाहिए. 2 एंगल अगर 180 से ज़्यादा देगा तो तीसरा एंगल तो और भी ज़्यादा देगा. इसका मतलब वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. उसके बाद सेकंड वन, क्या एक ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है. चलिए, क्योंकि दोनों मिलके आपको आ जाएंगे. नहीं, 180 तो आएगा नहीं, उसके बाद थर्ड एंगल से आपको मिल जाएगा 180. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंगल मोर देन 60 डिग्री. क्या तीनों एंगल 60 एंगल से ज़्यादा हो सकता है एक ट्रायंगल में? देख लीजिए, 61, 61 और 61 मान लेते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 183. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 180 मैक्सिमम है और मिनिमम भी 180 है, ना कम ना ज़्यादा. नेक्स्ट वन, ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री. क्या ईच एंगल 60 डिग्री से कम हो सकता है? मान लीजिए 59 डिग्री एंड 59 डिग्री फिल एट, यू विल गेट हियर 177, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. एंगल सम प्रॉपर्टी को इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है. उसके बाद ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री. हाँ, ईच एंगल 60 डिग्री हो सकता है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. 60 डिग्री एंड 60 डिग्री फिल एड इट, यू विल गेट हियर 180 डिग्री. यस, इट इज़ पॉसिबल. इट इज़ पॉसिबल फॉर 60 डिग्री. ईच एंगल इज 60 डिग्री.
Okay. So last one, fill in the blanks. A triangle has two sides, three angle and three vertices. Sum of the angles of a triangle is 180 degree. The side of scalene triangles are of different length. Each angle of equilateral triangle measures 60 degree. The angles opposite to equal sides of isosceles triangle are equal. And the last one, the sum of the length of the sides of a triangle is called is perimeter. I hope you people have understood. Thank you.